अमित तो मेसेज मत सब देखा जाउछे ओके so hello everyone I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology tell me how are you all केमिति अछ सब प्रिपरेशन केमिति कोन चली छी तो माने केमिति कोन अछ टिके आज रो सेशन टिके बहुत बहुत इंपोर्टेंट सो तमे माने जदी पारुछो शेयर करि पारुछो देन गाइस डू शेयर इट एंड जो माने भी क्लास को एंट्री करूछो देन स्टार्टिंग रो मु तो मानु कहूची टिके लाइक करिके आसो बिकॉज जदी मु परिश्रम करूची तो माने को पई क्वेश्चंस बनौची आणुची राती 10 टा रो 11 टा तो माने को पई निहाती मते टाइम टेकिंग लागुची apart from all my health issue I'm taking your classes then definitely I'm expecting the likes from you है ना so do it सब दिन important okay आसो तो लेट न करिकी फास्ट देखिबा आज रो टॉपिक कोन देशराम सुनानी आज पा आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल ऊपर आज हमें क्लास करूछी ओके आसो तो लेट न करिकी देखिबा फास्ट महापैक जदि आपण माने परचेज करूछंदी कोन बेनिफिट पाइबे 2 इयर्स भितरे 4000 ओनली प्राइस आपण माने एंड आपण माने जदि एसपीजी 10 कोड भी यूज करछंती एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी एठी पाइ जाउछंती apart from that जदि आपण माने कोनोसी वन डे एग्जामिनेशन पाइ नउछंती बैचेस स्पेसिफिक बैचेस सिंगल बैचेस ताहाले आपण मानू को प्राइस टिके अधिक पड़ी जिवो एंड वैलिडिटी ओनली 1 ईयर पाइबे बट जदि महापैक नउछंती वैलिडिटी 2 इयर्स पाइबे ता सहित आपण मानू को मच मोर बहुत सारा जिंस आपण मानू को सपोज आपण मान कर 1 ईयर सिलेबस सरी गला देन नेक्स्ट ईयर बेलकु किछि सिलेबस चेंजेस आछि बट एग्जाम आपणकर हे नाही इन दैट केस आपण माने 2 इयर्स वैलिडिटी रे महापैक नेले बेनिफिट पाइ परिबे ओके then जदि सिविल सर्विस पाइबे आपण माने प्रिपरेशन करूछंती then also अधिकारी बैच for the OCS pre examination 2025-26 pre plus mains only optional so different batches हम पाखरे available अछि with the different validity approximately आपण माने को जो pre plus mains आपण माने नेबे ताकू 1.5 year validity रखा जाई छि rest all आपण माने को 1 year validity सहित मिलि जिवो these are the respected price of the different batches and here is the helpline number आपण माने कॉल करी कि query solve करि परिबे देन रही छि ओडिशा टीचिंग एग्जामिनेशन पे जदि आपण माने प्रिपरेशन करूछंती एसएसबी टीजीटी हो जेटीएटी हो या फिर संस्कृत रो स्पेशल पेड बैच आपण माने एक्सपेक्ट करूछंती देन आल्सो हम पाखरे अवेलेबल अछि दीज आर द प्राइस ऑफ डिफरेंट बैचेस एंड हियर इज द हेल्पलाइन नंबर आपण माने कॉल करी कि डायरेक्ट क्वेरी सॉल्व करि परिबे आज जदि 200 वाचिंग हेबे मैम गिवअवे करिवे हो करिबा आसा फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामने रे ओके ठीक है जल्दी जीवा मते कहबो व्हिच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहा को कहूचे आपण माने जानि संती आर्टिकल 14 को हमें कोन कहूचे ना राइट टू इक्वालिटी आपण माने कोन रहूची ना आर्टिकल 14 होउची राइट टू इक्वालिटी एंड ओवर व्हाट राइट टू इक्वालिटी माने आपण माने कहा पर हबो ना ये गारंटी प्रोवाइड करिवो इक्वालिटी before law and equal protection of laws so that means आपनकर right to equality अच्छा आर्टिकल 19 आपनकर कोन प्रोवाइड करूची क्विक आर्टिकल 19 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स आपण मानु को दोउची जो 6 टा फंडामेंटल फ्रीडम्स अछि 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स गाइस ए जो 6 टा फंडामेंटल फ्रीडम्स आपण मानकर कोन अछि को माने मते कहि परिबे गोटे कहि दियो स्पीच एंड एक्सप्रेशन गोटाए रे आपण मानकर राइट टू स्पीच और कौन कहि परिबा ना एक्सप्रेशन तो ये आपनकर फर्स्ट रे गोटे फंडामेंटल हाउ कौन फंडामेंटल क्विकली मते को असेंबली गोटे फंडामेंटल रहिबो एसोसिएशन गोटे फंडामेंटल रहिबो कोन ना असेंबली गोटे रहिबो एसोसिएशन गोटे रहिबो दीज आर हेला आपनकर तीनटा हाउ कौन रहउची गाइस ना मूवमेंट रहउची हाउ कौन रहउची ना रेसिडेंस रहउची एंड प्रोफेशन रहउची सो मूवमेंट रेसिडेंस आपनकर कोन प्रोफेशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड और रहउची आपनकर प्रोफेशन सो ए 6 टा को नै कि हमें कहूचे आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 आपन को कोन कहूची क्विकली कहो आर्टिकल 21 आपन मान को कोन कहूची राइट टू लाइफ and personal liberty तो एठी आपण मान को लाइफ कथा कहूची दिस इज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहिले हमें बुझुचे आर्टिकल 21 सो रहिला कि आपण मान कर ना हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32 एते के जिंसा क्लियर ना किछि डाउट रहिला
जेतेबेले आपन को आर्टिकल 21 कहूची राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट मींस एठी आसी जीवा राइट टू प्राइवेसी राइट टू एजुकेशन राइट टू हेल्थ राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सो एई सब आपन मानकर कोथरे पळे आसीबो ना चारिटा पळे आसीबो आर्टिकल 21 रे आर्टिकल 32 को हमें कहूचे राइट to constitutional remedies and this remedies is considered as the heart and soul of the kono na amara constitution and eta apanakar directly approach of the supreme court ete ki jinsa मन होई परिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म अरे बा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी गला मते कहि दियो समस्त को प्रणाम समस्त को गुड इवनिंग देसराम किशोर अहल्या बढ़िया आंसर दउचो क्विकली आंसर मते यार टिके दियो क्विकली आंसर दियो व्हिच आर्टिकल प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म अनटचेबिलिटी कथा कहूची माने गोटे गोटे करके देखि देबा अच्छा आर्टिकल 15 आपण मानु कोन करछि ये प्रोहिबिट करूछि कोन करूछि ना डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स कोन ना रिलीजन कथा आसुछि रेस कथा पळे आछि कास्ट कथा सेक्स कथा और प्लेस ऑफ बर्थ दैट मींस ये डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट तो करूछि ये भी प्रोहिबिट करूछि बट कोन करूछि ना डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड रे ये आपनकर प्रोहिबिट करछि जोथरे आपन माने ऐड करि परिबे कोन ना कास्ट रिलीजन एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ पीओबी लिखि देछि कंफ्यूज होबनी प्लेस ऑफ बर्थ ओके देन आर्टिकल 17 आपन माने को कोन कंसीडर करछि क्विकली मते कहबो आर्टिकल 17 कोन करबो आर्टिकल 17 एटा आपनकर प्रोहिबिट करछि अनटचेबिलिटी को तो एबोलिश करबो अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली एंड मेक्स इट प्रैक्टिस आपण माने कोन जदी आपण माने को अनटचेबिलिटी आपण माने कोठी देखिले लोअर कास्ट लोक आपण माने तांको कहिबे यू आर अनटचेबल बैकग्राउंड टू बिलोंग करूछंती ताहाल इन दैट केस आपण माने कोन पनिश भी हेई परिबे सो एटा आपनकर आर्टिकल 17 रे अछि अच्छा आर्टिकल 18 आपण माने को कोन कहूची ताहाले टाइटल टू प्रमोट द सोशल इक्वालिटी एबोलिशेस द टाइटल आपण माने कहि परिबेनी कोन ना डिफरेंट एससी एसटी कैटेगरीज करा जायछि बट विथ द टाइटल हमें कहि परिबानी सपोज ओटा कि उठी जाय चागरु कह जाउतला अरे ये तो हाडी ये तो पाण ये तो सर और ये तो मुंडा एमती जो आपनकर कास्ट वर्ग थिला टाइटल दरी के आपण मान को धिक्कार करा जाउतला सेटा उठी जायछि अंडर आर्टिकल 18 रे आपनकर कोन हे जायछि ना एबोलिश हे जायछि टाइटल आपनकर एते के रिलेटेबल अच्छा आर्टिकल 20 कोन कहउछु ताल जल्दी को आर्टिकल 20 कोन कहउछि ना ये प्रोवाइड करूछि प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट व्हाट ना अनफेयर पनिशमेंट रे ये आपन को कोन करूछि ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूछि क्रिमिनल केसेस रे सो हमें एठी मो खाली लिखि दउछि क्रिमिनल केसेस प्रोटेक्शन एते के बुझि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चंस मते को द राइट टू एजुकेशन वाज इंसर्टेड बाय आर्टिकल 21 ने एबे डिस्कस करिथिले व्हिच अमेंडमेंट मेड दिस पॉसिबल ये को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग आपन कर हेसी राइट टू एजुकेशन जदी आर्टिकल पचार गले 21 ए बट एटा को अमेंडमेंट अकॉर्डिंग आपन कर इंसर्ट करा जायछि क्विकली ओनली वन टाइम पनिशमेंट यस चंद्रशेखर ओनली वन टाइम ही पनिशमेंट आपन कर हबो अच्छा 42 अमेंडमेंट आपन कोन कहितली ना फंडामेंटल ड्यूटीज आपन कर जोथिरा सोशलिस्ट हैला सेक्युलर हैला इंटीग्रिटी हैला ई आपन कर कोन ना फंडामेंटल ड्यूटीज को गाइस ऐड करिछि 42nd अमेंडमेंट रे 44th अमेंडमेंट कोन करूछि ना ये रिस्टोर करूछि डेमोक्रेटिक प्रोविजन को दैट मींस रिमूव करूछि आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट आपनकर थिला याकू रिमूव करि देछि अंडर 44th अमेंडमेंट सो एठी मु लिखि दोछि रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी then 86th amendment कोन कहूची ना 86th amendment आपनकर 21 आर्टिकल ले आसी जिवो जे कि हां 21 आर्टिकल ले आसी जिवो जे कि आपनकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करथिला काली बेटा को डिस्कस करिथिली 6 रु 14 वर्ष पर्यंत हना नै सो 86th amendment 92nd amendment कहले कोन बुझुछ ये आपनकर ऐड करिछि चारिटा न्यू लैंग्वेज कोथरे ना 8th शेड्यूल रे आपनकर 8th शेड्यूल रे 4 न्यू लैंग्वेज ऐड करिछि कहा अकॉर्डिंग 92nd अमेंडमेंट अकॉर्डिंग एतिक जिंस मन रहइबो क्लियर कोठी डाउट रहिले मते पचारिबो मु टिके कंटीन्यूअसली त मानकर कमेंट देखि पारुनी हैला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज रिगार्डिंग द राइट टू एस्टैब्लिश एंड
administer educational institutions एठी कोन पचाची ना minority right कथा पचारीची minority rights to establish and administer भी करा जीवो educational institutions माने करे तो आर्टिकल 28 आपण मानकर कोन कहूची ना ये रेस्ट्रिक्शन करूची कोहाकू ना रिलीजियस टीचिंग को जे कोनसी गवर्नमेंटल माने गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहूची सेइथरे आपण कर जदी रिलीजियस टीचिंग करा गला सपोज आसी की खाली कुरान पाठ विषय कुआ गला सपोज आसी की खाली आपण कर बाइबल विषय कुआ गला ताले कोनसी रिलीजियस टीचिंग आपण कर हेई परिबो नाही रेस्ट्रिक्ट द रिलीजियस टीचिंग restricts the religious teaching guys एतिक मन रहबो ये आर्टिकल 28 अच्छा आर्टिकल 29 आपन को कोन कहूची ना ये प्रोटेक्ट करूची हमर लैंग्वेज को हमर स्क्रिप्ट को एंड हमर कल्चर को कहार ना माइनॉरिटीज मानकर भी आपन कर डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेस अछि ट्राइबल स्क्रिप्ट अछि एंड ताकर ओन कल्चर अछि तो से मानकर कल्चर को आपनकर माइनॉरिटीज मानकर कल्चर हेला स्क्रिप्ट हेला लैंग्वेज को रिस्टोर करूची प्रोटेक्ट करूची आर्टिकल 29 एति की मन रखि परिबो प्रोटेक्ट्स कल्चर लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनर लिखि देछि माइनॉरिटीज आपण माने जानिबे व्हाट आर्टिकल 30 कोन कहूची अरे आर्टिकल 30 ही आपनकर माइनॉरिटीज माने को राइट प्रोवाइड करूची एस्टैब्लिश करिबा लागि एंड एडमिनिस्टर करिबा लागि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड आर्टिकल 31 कोन कहूची आपण को क्विक आर्टिकल 31 आपनकर डील करिवो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि रिप्लेस हे जाईची रिपील्ड हेची आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी क्लियर एटा आपनकर रिफिल्ड हेची ओके नेक्स्ट मते को फंडामेंटल ड्यूटीज वे आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर व्हिच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर ऐड करा जाउची ओके फंडामेंटल ड्यूटीज आपनकर ऐड करा जाउची अंडर व्हिच आर्टिकल अच्छा मते कहले आर्टिकल 44 कहले कोन बुझुचो ना आपनकर आर्टिकल 44 आसिला माने आपन माने जानि संती आकमे कहउचे डायरेक्ट कोन ना ये डायरेक्ट करूची स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ये पळे आसीबा आपनकर स्टेट सिविल कोड क्लियर देन आर्टिकल 50 को टिके आसी जाओ तापर 51 जीबा आर्टिकल 50 कोन कहउची ना ये एंश्योर करिवो द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट जुडिशियरी इज डिफरेंट जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव सहित मिसी न जाऊ तो ये आपनकर एंश्योर करूची कोन ये एंश्योर्स करूची द सेपरेशन between judiciary and executives एतिके रिलेट करे परिबो आर्टिकल 51 अपन को कोन कहउची ना कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन दैट डिनोट द आर्टिकल 51 ए 52 अपन कोन कहउची ना ये प्रोवाइड करउची फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एठी कोन ना ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया yes got it next question मते को व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत अच्छा विलेज पंचायत आसिला मते कहले टिके व्हिच आर्टिकल एठी कहूची कहा को रिलेट करची ना विलेज पंचायत को रिलेट करची जल्दी आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यस लोपा अहल्या संध्या रानी जल्दी यार आंसर दियो पॉइंट बाबू भी आज क्लास रे अछंती कस्मिका गाइस डू आंसर क्विक तो व्हिच आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत तबे विलेज पंचायत कथा पचरिबो ताहाले मते कहला आर्टिकल 40 कोन कहूची आर्टिकल 40 ही त आपनकर डायरेक्ट कहूची कहा को ना स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड गिव देम द पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट तो पंचायत लेवल ले भी आपनकर सेल्फ गवर्नमेंट पावर अछि दैट मींस गां रे पंचायत भितरे जहां भी आपनकर छोट बड़ गवर्नमेंट वर्क किछि होउची तार टोटल होल पावर कहा पाखे रहउची ना पंचायत पाखे रहउची सो ए पावर आपनकर कोन ना आर्टिकल 40 प्रोवाइड करूची अच्छा आर्टिकल 44 आपनकर कोन करूची ना ये आपनकर डायरेक्ट टू द स्टेट एबे कहितली अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड पा ये आपनकर स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड ओके शॉर्ट फॉर्म में लिखिछि काना आगुर आपन मानकु एलाबोरेट करिछि आर्टिकल 48 आपन मानकु कोन कहउछि ना स्टेट को ऑर्गेनाइज करिबा को एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी ये आपण मानकु डायरेक्ट करूछि डायरेक्ट टू स्टेट
to organize agriculture and animal husbandry. अच्छा आर्टिकल 51 एबे ही तुम माने कहितिलो आर्टिकल 51 एबे कहितिलो प्रमोट करछि कोन करूछि ना आपनकर इंटरनेशनल जहां भी पीस एंड फ्रेंडली रिलेशन इंटरनेशनल फ्री एटा आपण माने जो कहितिले एटा आपण माने आर्टिकल 51 ए कहितिले 51 ए रे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज वर ऐड हेतिला हन नै बट जदी एग्जैक्टली 51 कथा पचारला एठी आपनकर परि आसीबो promote करूची international peace and friendly relation with other countries international peace कथा लिखि देले आपण माने जानि देबे is that clear next question मते कहबो the concept of a uniform civil code कहितली the concept of uniform civil code guys कहिची is mentioned in एटा आपनकर कोठी मेंशन हेची एबे त माने को डिस्कस करितली देखिबा केते मन रखिचो देखिबा केते मन रखिचो क्विक 42 पक्का अरे 42 आपण माने कोन करूची एन्श्योर करिवो जस्ट माने आपण कोन कहि परिबा द ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क ऑन द मैटरनिटी रिलीफ दिस वन इज अ डिफरेंट वन आर्टिकल 44 आपनकर करिवो देखिबा मु कंफ्यूज नै तो ना आर्टिकल 44 ही आपनकर करिवो डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस आर्टिकल 46 हेले आपण माने कोन कहि परिबे ना प्रमोट करूची एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द एससी एसटीज वीकर सेक्शन तो एटा आपण मानकर एजुकेशनल कोन ना रिफॉर्म्स आसुची फॉर एससी STs and आपनकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मान ओके आर्टिकल 48 कोन कहतिली ना प्रोटेक्ट करूची कोन ना प्रोटेक्ट द काउस एंड इंप्रूव द एनिमल हस्बैंडरी द एनिमल हस्बैंडरी कथा कहूची माने द एनिमल हस्बैंडरी कथा कहूची माने आपण माने रिलेट कर देबे आर्टिकल 48 को इज दैट क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चंस मते कुहो which article mandates the separation of the judiciary from the executive एटा भी कहिथिली देखिबा कोन कहउछ देखिबा क्विक यस पुरिनो ना फ्री लीगल एड्स यस मते को देखिबा केते आंसर दउछ 49 कोन कहिथिली 49 मध्ये डिस्कस हेइ ना आर्टिकल 49 ये आपनकर प्रोटेक्ट करूची आवर मॉन्यूमेंट्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सपोज आवर फ्लैग हैला हमर अशोक चक्र हैला तो एई सब को आपण मानकर मॉन्यूमेंट्स मानकू सो प्रोटेक्ट करूची आवर मॉन्यूमेंट्स ओके आर्टिकल 50 कहूची कोन ना ये आपनकर कोन करूची आर्टिकल 50 कोन करूची ना दिस इज द डायरेक्ट सेपरेशन आर्टिकल 50 आपनकर डायरेक्ट सेपरेशन करूची काहाकू ना जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव टू एनसीओ द जुडिशियल इंडिपेंडेंस हने आर्टिकल 51 कोन करूची ना डील विथ कहितली एबे कोन 51 हेले इंटरनेशनल कोन आसीबो ना पीस आसीबो आर्टिकल 52 कहले कोन आसीबो 52 कोन कहितली ये प्रोवाइड करिवो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट सो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हेले मते कहिबो आर्टिकल 52 आसी जिवो सब रिलेट करूछ तो 100 पिला छ तो 100 टा लाइक आई आल्सो डिजर्व ओके तो डिजर्व करूची माने दियो आंसर जल्दी व्हिच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहिबा निहाती दरकार एटा भी गोटे आर्टिकल ले मेंशन करा जाईची डिक्लेयर दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 52 गाइस जल्दी चिल्लाओ कोन आर्टिकल 52 रे होची आर्टिकल 54 कोन करूची ना ये डिस्क्राइब करूची द इलेक्टोरल कॉलेज कोन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन सो प्रेसिडेंट इलेक्शन कथा पचारुची जदी प्रेसिडेंट इलेक्शन कथा पचारुची जदी आर्टिकल 54 आर्टिकल 61 कहले कोन कहि परिबो ये प्रोवाइड करूची कोन ना प्रोवाइड द प्रोसीड्यूर फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहिले impeachment of the president guys कहिले कहा को रिलेट करेबो ना procedure provide करूची impeachment of the president that is article 61 and what does article 72 say now gives the president power of pardon reprieve respite
remission तो आपनकर P triple R the power of president guys P triple R आपको रिलेट करेबो आर्टिकल 72 रे yes or no रे मते आंसर दियो स्पीड हे जाउ छ की मते खाली को स्पीड हे जाउ छ की आसा next questions answer दियो the procedure for the impeachment of the president is found in the procedure of impeachment कौन रिलेट करैथिली देखो आर्टिकल 60 कहले अपन माने कौन रिलेट करसंती that this is the oath or the affirmation of the president तो oath अपन मानकर टेक oath taking ceremony जो हुए oath हुए या फिर हमें ताकि कोन ना affirmation बोली कहू छे of ना of president ये आपनकर पड़ी आसीबो कोथरे अंडर आर्टिकल 60 yes or no तो आर्टिकल 61 हमको कौन कहू छी ना it lays down the procedure for impeachment of the president the procedure of the impeachment of the president just एबे अपन मन को एलाबोरेट करूथिली एटा कोन ना आर्टिकल 61 रे ओने पडुची वेरी गुड साला आर्टिकल 63 गोटे क्लास रे अपन मन को सब इंपोर्टेंट आर्टिकल कवर हे जिवो सेति की विश्वास रखी की क्लास रे बसो आर्टिकल 63 कहले कोन कहउचो ना ये प्रोवाइड करू ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 कोन ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैला then article 74 कोन कहउची ना deals with the council of ministers to aid and advise the president the councils of minister आपनकर president का पाखरे रहिबे जे कि advise करि परबे if required then एटा आपनकर article 74 रहउची the councils of minister for advising the president तो एटा आपन माने रिलेट करि परिबे Is that clear guys? Is that clear? Next questions. मते कुआ अच्छा अगेन पळे आसला 10 टा क्वेश्चंस गाइस सॉरी गला तो महापैक को आपण माने 4000 रे अवेल करि परिबे 2 इयर्स वैलिडिटी सहित जोथि आपण माने सब वन एग्जामिनेशन गोटे पैक रे पाइसे नेक्स्ट अच्छा आपण माने पय गोटे शॉर्ट ट्रिक भी आनिथिली दिस इज अ न्यू थिंग आई हैव डन फॉर यू गाइस ओके सी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माने अछंती जोटा कि इजीली आपण माने गोटे ट्रिक रे मने रखि देबे ओके केमिति ना प्रेसिडेंट आपनकर के रहइले ना हमर नेशन रो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सेम टू द स्टेट रो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहइबो देन हमर गवर्नर तो ये को आर्टिकल ना अंडर आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट रहइबे स्टेट आपनकर नेशन रो हेड एंड अंडर आर्टिकल 153 गवर्नर रहिबे आपनकर कोन ना स्टेट रो हेड अंडर आर्टिकल 76 आपनकर अटॉर्नी जनरल रहिबे कोन नेशन हेड देन एठी आपनकर एडवोकेट जनरल रहिबे 165 आर्टिकल मेंशन हेछि स्टेट रो सेम आपनकर सीएजी रहउसंती नेशन रो 140 आर्टिकल मेंशन करूछि इलेक्शन कमिशन 324 रे मेंशन हेछि दिस आर द आर्टिकल ब्रैकेट रे अछि देन यूपीएससी आपनकर एस्टैब्लिश हेछि अंडर द आर्टिकल 315 रे सो एति के जिंस आपन मानक पय इंपोर्टेंट याकु टिके भलसे मने रखिबो क्लियर चलो नेक्स्ट मते को अंडर व्हिच आर्टिकल डज द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू ग्रांट द पैर्डन्स तो ग्रांट करिबा को पैर्डन्स कोन ना आपनकर को आर्टिकल रे पावर दिया जाय छै प्रेसिडेंट को देखो 71 कहले अपन मन को कोन कहली ना ए डील करिवे कहा सहित ना डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्टोरल कहा सहित माने रिलेटेड विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट सपोज आपनकर इलेक्शन डिस्प्यूट होउची कौनसी प्रकार इलेक्शन डिस्प्यूट होउची प्रेसिडेंट कर हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट कर हो यांकर रिलेटेड एटा अंडर आर्टिकल 71 ने आपण मानकर कोन छडा आसो देन आर्टिकल 72 आपण मानकर प्रोवाइड करूची कोन ना ये प्रोवाइड करूची प्रेसिडेंट को द पावर टू ग्रांट द पैर्डन द रिप्राइज द respite and the remission the P triple R then article 76 आपण को कोन कहूची आर्टिकल 76 अपॉइंटमेंट करूची कहा को ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होउचंती अंडर आर्टिकल 76 अंडर आर्टिकल 80 आपनकर कोन होउची ना डिस्क्राइब्स करूचंती द कंपोजिशन ऑफ द राज्य सभा द कंपोजिशन ऑफ द राज्य सभा कोउतरे होउची जल्दी कंपोजिशन ऑफ राज्य सभा
मु कहूची आर्टिकल रो गोटे भी क्वेश्चंस आपनकर क्लास बाहर को पड़िबो नाही सेति की ट्रस्ट रखी की क्लास करो एंड जदी पड़िला देन त माने मते कहबो ना तो तळे हसी देबी हैला आसो नेक्स्ट मते को द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर व्हिच आर्टिकल एबे कहली क्विक को आर्टिकल अंडर रे अरे आर्टिकल 76 अंडर रे कहली कोन प्रोवाइड करूची अपॉइंटमेंट ड्यूटीज एंड द राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल कोन ना राइट प्रोवाइड करूची कोन ना अपॉइंटमेंट करिवो तांकर ड्यूटी बुझेइबो तांकर राइट्स बुझेइबो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रो क्लियर अपॉइंटमेंट राइट्स duties एतिक आपनकर make it understand the article 76 that is of India attorney general of India article 74 आपनकर कोन कहितली deals with the council of minister आपनकर जे रहबे एडवाइस करबे लागि प्रेसिडेंट्स को the councils of minister लिखि दोची आउ थरे council of ministers article 78 quick article 78 कोन कहितली जल्दी कहूना माने जोश पोस किछ नाही बोधे क्लास करबा को एग्जाम जते पाखे आसु जे तमाने खाता बही धरि खाली रांपी हबो आ ता छडा किछि ऑप्शन तम पाखे नथिबो बट जते बेले फ्री टाइम रे माने अधिक रु अधिक हमें क्वेश्चंस डिस्कस करि परिबा सेते बेले तम मानकर किछि इंटरेस्ट नाही कोन तमाने करिवो वीक तो खराब आ सप्ताहटा बा खराब ए वैलेंटाइन वीक रे तम मानकर तो पढिया को इच्छा ही हो नथबो लोपा आ थरे रीजन हे जाओ बेटा रीजन हे जाओ सेठी पाई तो सेमिति अरेंज करिछि सो दैट तमानकर नेक्स्ट क्वेश्चन रे आराम से मन रहि जिवो बट तम माने को बुझेइबो किए मते को तमे माने निजे बुझी गेलो सेटा ठीक मु बुझेइबि जे तम माने को बुझा पड़िबनी तो आर्टिकल 78 तम माने को कोन कहितिनी ना आपनकर ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द कोन ना आपनकर जहा भी आपनकर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रहइबो टू द प्रेसिडेंट तो आपन माने भाबी दियंतु प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड विथ द प्रेसिडेंट माने प्राइम मिनिस्टर कर ड्यूटीज रिगार्डिंग आपनकर रहइबो प्रेसिडेंट कर हैला with respect to president article 85 कौन कहबो article 85 guys कौन कहूची quick deals with the sessions propagation and resolutions of parliament the session parliament next मते को which article defines the money bill yes Mr Sonal yes which article defines the money bill कहले कोन कहछ 108 बदे ना 108 नो ताहले 108 ता कोन करूची 108 ता ताहले कोन फेमस वन अरे जॉइंट सिटिंग 108 ता कोन ताहले ना जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो जॉइंट सिटिंग कहले जॉइंट सिटिंग गाइस कहले हमें रिलेट करि परिबा बोथ the houses of the parliaments हाँ ना नहीं yes or no right answer कौन article 110 है ना 108 is my lucky number सेति में मुझे भल से मन रखे है ना so 110 अपन मानकर कौन होची ना defines the money bills and अपन मानकर जहाँ भी current bill रहिबो ताको define करिबा अपन मानकर कौन डिफाइन करिबा अपन मानकर अंडर आर्टिकल 110 अंडर आर्टिकल 112 अपन मानकर कोन होबो ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करिबा दैट मींस जोडा आपनकर यूनियन बजट जो अंडर आर्टिकल 112 अपन माने डायरेक्टली रिलेट करे देबे यूनियन बजट सहित आर्टिकल 123 कोन करूची डील्स विथ द प्रेसिडेंट्स कोन तांकर ऑर्डिनेंस एंड तांकर मेकिंग पावर सेंस रे तो प्रेसिडेंट्स पावर अपन मानकर President's kara power, President's ordinance and making power under article 123 guys clear next chala mate ko sorry the president's power to promulgate ordinance during the recess of parliament is found in quickly ko ebe pa कहली under article 110 कौन है गला ना मनी बिल जोटा कि समस्तिन करा फेवरेट बिल ना कि मनी बिल 110 है गला 120 हेले कौन होची ना ये डील करू छ हमरा लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट रे आपण पर को टाइप रे लैंग्वेज आपण पर कोन ना यूज करा जिवो तो लैंग्वेज यूज इन पार्लियामेंट लैंग्वेज
use in parliament एटा आपनकर डिफाइन करूची गाइस कोन ना अंडर आर्टिकल 120 अंडर आर्टिकल 123 आपनकर कहितली एम्पावर करूची प्रेसिडेंट कर promulgate करूची ऑर्डिनेंस को विथ द पार्लियामेंट एतिकी जिंस मन रखिबो माने जते बेले आपनकर पार्लियामेंट सेशन न थाए ओके नेक्स्ट आर्टिकल 143 अपन मनकर कोन करूची ना ये प्रोवाइड करूची एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो आपनकर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टाइम रे डिसीजन मेकिंग टाइम रे आपनकर किछि जूरी थांती तांका पाखरे तो जो जूरी पावर रहिबो सो प्रोवाइड्स फॉर द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कीप इट इन योर माइंड एडवाइस जुरिसडिक्शन कहा को ना टू सुप्रीम कोर्ट एतिकी जिंस मन रखिबो yes Andolina next questions mate kuha which article establishes the Supreme Court of India very good asa Supreme Court of India apanakara ko article under establish heichi quick ko article are provides the establishment composition and appointment of the judges of the Supreme Court under article 124 very good under article 129 ताले कौन है जी ना ये डिक्लेयर करी छी द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो डिक्लेयर हो इथरे कोन ना डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनिंग ओके आर्टिकल 131 ताले कोन करी छी मते कहि दियो सेही सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड बट ये डील्स करिबा कहा सहित ना डील्स विथ द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट ये आपनकर कोन ना ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को डील करिबो आर्टिकल 143 आपण मानकर कोन कहबो क्विकली आर्टिकल 143 ये प्रोवाइड करिबो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कोन ना सुप्रीम कोर्ट रे जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन रहिबे जोटा कि प्रीवियस क्वेश्चंस रे आपण मानकू कहिली yes or no yes next question mate ko a controller and auditor general of India is covered under आपनकर कंट्रोलर रहिबे एंड सीएजी रहिबे आपण मानकर कोन ना इंडिया रे ये आपनकर कहा अकॉर्डिंग रहिबे मते की कहि परिबो क्विक की हबो राइट आंसर देखो अंडर आर्टिकल 144 एबे हमर कोन कहितली ना ऑल अथॉरिटीज मस्ट बी act in aid with the Supreme Court. So authority, high authority power कहाँ तक रहेगा ना Supreme Court having the highest authority that maintained under Article 144. What does the Article 148 say? Now it provides for the appointment, the duties and the powers of the CAG of India. Article 153 ताले कौन कहूँ guys? Now there shall be a governor of each state. The governor must be present in each state. Governor of each state आपनकर कहूची किए ना Article 153 guys कहूची Article 165 आपनकर कौन कहबो ना अपॉइंटमेंट करूची कहा को ना अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द सॉरी आपनकर कोन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया माने सॉरी इंडियन स्टेट एडवोकेट सीएजी आपनकर रहबे यूनियन रे माने सेंट्रल रे एजी आपनकर रहबे स्टेट रे तो एडवोकेट जनरल कर अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पॉइंट होंती कोन ना पॉइंट होंती अंडर आर्टिकल 165 ओके क्लियर मैम ऐसा एग्जाम स्टेट रे हबनी कि कोन करिवे हमर काम में पढिबा कोटा हबो न हबो तो सेटा कमेंट करिवो ना हम हाथ रे थिले त हम यू कर दियंते हो ना चलो नेक्स्ट पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स इन मेंशन्ड मते को पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल को आर्टिकल मेंशन करा जाई छी देखो आर्टिकल 160 अपन को कोन मेंशन करू छी ना डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन इन कंटेंजेंस कहि परिबा ना नहीं मते को सो डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर पचारिले डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर पचारले आपण माने कहबे अंडर आर्टिकल 160 बट जते बेले क्वेश्चंस पचारची गवर्नर माने गवर्नर को पावर कथा पचारुची जतरे पैडन मिलुची रिप्राइज मिलुची आपण कोन पी ट्रिपल आर मिलुची सेटा को हमें कहि परिबा
कम्युनिट सेंटेंस रे कोन ना कम्युनिट सेंटेंस रे ताको आर्टिकल 161 रे मेंशन करा जाईछि हना नै मते को देन आर्टिकल 163 आपनकर कोन कहूची ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एक्ट द एडवाइस ऑफ गवर्नर जेमिति प्रेसिडेंट को पाखरे आपनकर रुहंती एडवाइजरी बॉडी सेमिति गवर्नर को पाखरे भी आपनकर एडवाइजरी मिनिस्टर्स माने रहिबे मिनिस्टर्स माने रहिबे near governor that mentioned under article 163 what does in article 167 mention na duties of the chief minister towards the governor जेमिति आपनकर article mention करूथिला pm को तांकर duties कोन towards the president same आपनकर under article 167 mention करा जाउची what are the duties of chief minister towards your governor so it mentioned the duties of chief minister towards governor is that clear next question mate ko the advocate general for the state जोटा कि आपनकर counterpart to the AG is under the advocate general आपण माने AG जान को हमें कहूचे सो ये आपनकर स्टेट रहिबे तो अंडर आर्टिकल कोटा मेंशन करा जाईछि मते को आर्टिकल 164 is the famous one जो थरे मेंशन करा जाउची कि सब स्टेट रे आपनकर चीफ मिनिस्टर रहिबे एंड अदर मिनिस्टर्स माने रहिबे सो appointment of chief ministers and other ministers आपण मानकर मेंशन करा जाउची आज्ञा माने कोथरे आर्टिकल 164 एटा मेंशन करा जाउची आर्टिकल 165 रे कोन मेंशन करा जाउची ना ये प्रोवाइड करूची फॉर अपॉइंटमेंट ड्यूटीज and आपनकर all the rights of the advocate general of the state article 170 रे आपनकर कोन मेंशन करा जाउची and the composition of the state legislative assembly the composition assembly article 177 रे कोन कहूची लोपा मौसुमी विक्रम सुभद्रा वर्षा अहल्या सुशील मौसुमी पूजा संघमित्रा जगत जल्दी आंसर दियो कौन कहूछ आर्टिकल 177 कौन कहूची ना राइट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल टू पार्टिसिपेट इन द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स रे तो जे कोनोसी आपनकर स्टेट लेजिस्लेटर प्रोसीडिंग्स हबो सेहिथि आपनकर पार्टिसिपेट किए करिवे ना ऑल द मेंबर्स एंड द एडवोकेट जनरल तो पार्टिसिपेट of participation actually adjective is na participation of ministers and advocate general in where कोठी कहली ना आपनकर जेते सब स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स हब Is that clear guys? The right of the ministers participate. Very good Simanchal. आहुरी शॉर्टकट कर देला ना कि हो. Next question मते को this article deals with the appointment of the governor of the state. हां एटा तो बढ़िया क्वेश्चन दा. एटा तो बढ़िया क्वेश्चन दा. मते कहिलो अच्छा राइट आंसर आपण माने आको कहि दियंतु तापर मु चारटा जाको एक्सप्लेन करिवि. मते को चारटा जाको एक्सप्लेनेशन आपन को भलो लागुछि ना नाही? सॉरी मैम क्लास ठीक से करी हो नहीं बफरिंग पाई अरे समस्तिंकर बफरिंग होउची ना खाली लोकर बफरिंग होउची समस्तिंकर बफरिंग होउची ना ओनली लोकर बफरिंग होउची विजय लक्ष्मी टिके कहिलो बफरिंग होउची कि तमरो दीप्ति पुरी नना एंटोलिना समस्तिंकर बफरिंग होउची यस मैम कहूचो सबो मते तो बफरिंग होउनी टोटल भी एडे मिछुआ गुडा तम माने भगवान भगवान मझिरे मझिरे बफरिंग होउची मते कोन पे देखा जाउनी थाले मते काई भल लागोनी सॉरी मते काई देखा जाउनी ते केउडे लिखला एस मैम क्लास भल लागुची मते मेसेज देखि कोची मते काई भल लागोनी ओके यार राइट आंसर आपण माने देई दियंतु तापर तेरु भाबीबा तमान के सहित मझिरे मझिरे गपसप होनी सेथि लागि तमान को मेबी क्लास भल लागु नथबो ना कि मझिरे मझिरे तमान के सहित गपसप कले तमान को भल लागिवो मु जानि छी आज टाइम
छी मु गपी पारिबी बट कोन करबा माने सकाळू पुणी 9 रे क्लास अछि ना तो गपी की टाइम वेस्ट काई करबा कोन हां 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 155 अंडर आर्टिकल 150 है कोन आर्टिकल 155 कहलोनी 56 ता ताले कोन अच्छा 56 ता आपन टर्म्स ऑफ द गवर्नर ऑफिस ऑफ द गवर्नर नहीं हां व्हाट अंडर आर्टिकल 155 आपन मेंशन हेची द गवर्नर कर अपॉइंटमेंट कहा द्वारा की अपॉइंट करंती ना प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ए जिंसटा मन रखता बाकी रहला अंडर आर्टिकल 156 आपन कोन करची ना टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर गवर्नर आपन ऑफिस केते पर्यंत रहिबे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर क्लियर एंड 152 टा गाइस इंपोर्टेंट मते टिके कहिलो अंडर आर्टिकल 152 आपनकर कोन कहूची डेफिनेशन ऑफ द स्टेट कोन कहूची ना डेफिनेशन ऑफ स्टेट हैंडराइटिंग चिनी न पाले गाइस प्लीज मते कहिबो ट्राई करिबे टिके बेटर वेरी लिखिया लागे हैला चलो आर्टिकल 160 टिके जल्दी कहि दियो डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन इन सर्टेन कोन ना जहां भी आपनकर प्रॉब्लम थाई तो डिस्चार्ज एठी आपनकर हेई जिबे गवर्नर डिस्चार्ज कोन गवर्नर होंदी डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शन क्लियर चलो नेक्स्ट मते को ऑर्डिनेंस कथा कहूची ना द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर है यस अहल्या बफरिंग होची सीरियसली क्लास बफरिंग होची कोन कहूच मते काय बफरिंग शो करनी रे मते बफरिंग शो करूनी ओ देखिबा अच्छा ऑर्डिनेंस मेकिंग कथा कहले आपण माने रिलेट करिवे का सहित ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दैट इज रिलेटेड विथ द आर्टिकल 213 को माने सब 213 देइछ सी वेरी गुड सब तो तुम माने जानिछ पॉलिटी ऊपर बढ़िया कैच अछि तुम मानकर ओडिसा जीके को छाडी की पॉलिटी पढले तो माने बढ़िया आंसर दोछ ना हो आर्टिकल 123 कोन कहूची ना ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कहारो ना प्रेसिडेंट कर एटा डिस्क्राइब कर देछि ऑर्डिनेंस मेकिंग power ordinance making power of president clear article 210 कौन कहिची ओके ग्रेट देन केडी सर जदि आपण मानकु बढ़िया पढै चंती मते बहुत खुशी लागुछ आपण माने आंसर दो चंती एते बढ़िया ओके को आर्टिकल 210 कौन कहूची ना लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर तो जेमिति ओडिसा रो स्टेट लेजिस्लेचर रे ओडिया लैंग्वेज यूज होबो तो को लैंग्वेज आपनकर यूज होबो को स्टेट लेजिस्लेचर रे लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर देन आर्टिकल 214 आपण माने को कोन कहूची आर्टिकल 213 तो वाला राइट आंसर आर्टिकल 214 कोन कहूची अरे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिला आर्टिकल 214 कोन हेतिला रुह लास्ट को बहुत सारा क्वेश्चंस तुम मानक पई अछि व्यस्त हुओनी काई एमती होछ नय न देखनु डैश 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 बढ़िया क्वेश्चंस आपण मानकर अछि क्लियर अछि मैम हम साइड तांको साइड्स नेटवर्क रहिबो कोन कोचम किछ बुझ पानी ओके आसो नेक्स्ट मते कुआ अरे वाह ओके तो महापैकेज आसी गला आपण मानक पे पूरी थारे 4000 रे 2 इयर्स वैलिडिटी सहित इतरे ऑल वन एग्जामिनेशन आपनकर कवर अप हेसिबो 8280 8280 हां 8280 32825 को कॉल करी पारिबे चलो नेक्स्ट मते को व्हिच आर्टिकल गिव्स हाई कोर्ट द पावर व्हिच गिव नो बफर मैम ऑल क्लियर थैंक यू ओके व्हिच आर्टिकल गिव्स हाई कोर्ट द पावर ऑफ इशू अरे बे ओडिसा को आसिले एबे ओडिसा को आसिले सॉरी नी क्लास काई व्यस्त होचो सॉरी नी क्लास अभी तो ये ट्रेलर है मूवी तो बाकी है चलो मते को व्हिच आर्टिकल गिव्स हाई कोर्ट द पावर टू इशू राइट्स
तो इशू आपनकर रीड्स गुरा को पावर प्रोवाइड करछि अंडर व्हिच आर्टिकल मते को 224 आपनकर कोन करछि अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल एंड acting judges on the high court. So additional judges आपनकर high court रे appoint हेबे additional and acting judges आपनकर high court रे आपनकर कोन हेबे appoint हेबे high court रे appoint हेबे. This is under article 224 have been mentioned. मते कुह under article 226 कोन कहछि यही आपनकर empower करिछि high court को जोतरे कि issue reads karichi for the enforcement of the fundamental rights and the other legal rights also. Article 226 कहलो त right answer 226 230 काई कहलो 230 काई कहलो अच्छा extensions of jurisdiction कहिछ very good आसुछि ता पर को मते को आगो under article 228 कोन हेछि कोन हे परिबो ना in some certain cases आपनकर जो subordinate court रहिछि ये आपनकर ट्रांसफर हे परिबो कोठी कि ना हाई कोर्ट को सो एटा आपनकर in some certain cases subordinate courts can transfer to high court. This has the power. And article 230 जोटा कि आपण माने बे कहिले extensions of the jurisdiction कोठी ना हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटोरीज कोठी कहबो ना ओ सेमते कहले केनथि हबो एक्सटेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन एक्सटेंशन अरे कोन हेची ना एक्सटेंशन हेची एक्सटेंशन ऑफ कहारो जुरिसडिक्शन रो कोठी को हेची ना एक्सटेंशन ऑफ जुरिसडिक्शन माने ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटोरीज. Is that clear? Is that clear? सबु आसुची रे सबु आसुची हैला आसा ओडिसा जीके रो माने पूरा घंटी की तमन को पकेइबो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी मिसेलेनियस आर्ट एंड कल्चर सबु पकेइबो हैला. चल नेक्स्ट मते को व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम सभास इन द पंचायती राज सिस्टम. अच्छा तमन को पढ़े सारी छि मु कोन ना ग्राम सभा रे कोन रोल सॉरी छि क्लास. अच्छा मते एबे कहला टिके एटे को आर्टिकल रे प्रोवाइड करा जाय छि कि प्रोविजन फॉर द ग्राम सभा एंड पावर्स ऑफ द फंक्शन पावर्स एंड फंक्शन ग्राम सभा रे रहिबो एंड सेटा आपनकर पंचायत अंडर रे रहिबो एटा अंडर आर्टिकल 243 ए रे मेंशन करा जाय छि. वेरी गुड घोषी देइछ अरे खुशी लागु जे क्लास ता हाउ अंडर आर्टिकल 243 रे कोन मेंशन करा जाय छि that this relate to the definition of Panchayati Raj system. हैंडराइटिंग चिन्ह न पाले कहबो प्लीज कोन लिखिले बोली मु तमन को रिपीट करि देबी हैला. आसो आर्टिकल 243 हे गला आर्टिकल 243 बी रे ताले कोन मेंशन करा जाय छि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो 3 टायर सिस्टम्स आपन कर नाही जो 3 टायर सिस्टम्स अछि ए 3 टायर सिस्टम रो एस्टैब्लिशमेंट को काकू ना एस्टैब्लिशमेंट को आपन कर मेंशन करा जाय छि आर्टिकल 243 बी रे हैला. आर्टिकल 243 सी रे कोन हेछि ना कंपोजिशन ऑफ द पंचायत मींस किए मेंबर आपन मन कर रहिबे वार्ड मेंबर टू नै कि नायब सरपंच टू नै कि सरपंच जाय पीओ पर्यंत आपनकर जो कंपोजिशन मेथड रहउची ना कंपोजिशन ऑफ द पंचायत अंडर आर्टिकल 243 सी. Is that clear? Is that yes Balwant Rai committee. Next mate kuha and which article gives parliament the power to legislate on matters in the state list in the national interest. तो मते को पार्लियामेंट को प्रोवाइड करा जाय छि से माने परमिशन मिली छि तो अंडर व्हिच आर्टिकल देखो 248 मु तमन को कहिनी 243 डिस्कस हेनी बोधे ना हेनी तो 248 रे आपन कर कोन हेतिला दिस इज द रेसिडुअरी लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट पाखरे रहिछि. तो रेसिडुअरी पावर कहिले of parliament
This is under Article 248. Under Article 249 mention है the Parliament can legislate on the state list on the state list if Rajya Sabha passes the resolution in national interest. जदि राज्य सभा ताकू रिजोल्यूशन को पास करिछि इन दैट केस आपनकर पार्लियामेंट कोन करि परिबो ताकू कंसीडर करि परिबो ताकू लेजिस्लेट करि परिबो. आर्टिकल 250 आपनकर कोन प्रोवाइड करूछि ना पार्लियामेंट्स पावर ड्यूरिंग द इमरजेंसी कोन कहिछि ना ड्यूरिंग इमरजेंसी what are the powers of parliament? My dear bachas and bachis, बुझी पारिस proclamation, very good ma'am. all of articles माने रखिबा पई किछि भी उपाय देबे नेक्स्ट वीडियो रे प्लीज मैम डेफिनेटली दिप्ति सेति पई तो मस्ट आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को द फाइनेंस कमिशन is constituted by the president every 5 years under. देखो फाइनेंस कमिशन आपनकर होउची आपण मान जानि संती एबे जस्ट आपनकर गल्ला तो मते कुह तो यूनियन बजेट आसीला तो सेतिर आपनकर बजेट पास होउची कहा द्वारा होउची ना फाइनेंस कमिशन द्वारा होउची तो मते को जो फाइनेंस कमिशन आपनकर एस्टैब्लिश होउची एवरी 5 इयर्स रे थरे होना नहीं तो एटा अंडर आर्टिकल कोन ना 280. very good. Under Article 280 it provide करूची for the constitution of the finance commission every 5 years. 275 आपनकर कोन कहूची ना ये ग्रांट करूची in aid to the state. ग्रांट द एड आपनकर केते रहिला कोन कोठी अमाउंट दरकार होउची ग्रांट इन एड टू स्टेट. क्लियर. आर्टिकल 282 कोन कहूची आर्टिकल 282 के कहि परिबो पब्लिक पर्पस पाई कोन ना आपनकर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स प्रोवाइड करूची फॉर द पब्लिक पर्पस. आर्टिकल 285 गाइस कोन कहूची क्लियर एबे कहितिलो एबे तो माने कहितिलो आर्टिकल 285 एक्सपेंड करूची कोन करूची ना exemption of union property from the state taxation. कोन करूची ना यूनियन प्रॉपर्टी स्टेट टैक्सेशन रु एक्सेप्ट हे जिवो एटा माने जदी किछि भी माने बुझी जानदो आपण माने सपोज आपनकर किछि भी यूनियन रे प्रॉपर्टी स्टेट रे बिलोंग करूची देन इन दैट केस स्टेट ताकू टैक्स कलेक्ट करि परिबो ना एते कि जिंस बुझी परलो तो यूनियन Is that clear? Yes. कोठु भी मन रखिबो ना कोठु भी मन रखिबो. So मते को नेक्स्ट कोन कहची ना right to property was moved को आर्टिकल ले. Right to property was moved from fundamental rights to legal rights under this article. Right to property आपनकर fundamental right ru कोठी की ना legal right को मूव हे गला but this has mentioned under this article. को आर्टिकल एटा मेंशन करा जाय छि देखो आर्टिकल 31 कहले आपण माने वेरी क्लियर कोन कहि परिबे द अर्लियर फंडामेंटल राइट टू द प्रॉपर्टी आपनकर मेंशन हेतिला कोथरे ना अंडर आर्टिकल 31 रे एटा आपनकर अर्ली स्टेज रे अर्ली इट वाज गाइस मेंशनड. ओके so under article 300 आपनकर कोन हेसी ना किछि सूट्स हैला एंड प्रोसीडिंग्स हैला जदी कहा द्वारा ना अगेंस्ट द गवर्नमेंट हैला कोन ना प्रोसीडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एटा आपनकर अंडर आर्टिकल 300 हबो. under article against government. Okay, and article 300A रे mention करा जायछि what ना it provides the right to property as a constitutional legal right instead of the fundamental right. It was been replaced from 31 to 300A.
देन 3 आपनकर 301 रे कोन मेंशन करा जायछि ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स तो ट्रेड कॉमर्स कथा कहूछि माने ट्रेड एंड कॉमर्स कथा कहूछि माने गाइस 301 को मन रखि देबे अपन माने ओके इज दैट क्लियर नेक्स्ट मते को व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस एंड आईपीएस जो मान को निंद लागुची प्लीज आओ मु तो मान को कहिबी आउ टिके भलसे पानी पानी पी की निद मेडिसिन खाई की सोई पड़ो ओके डू टेक केयर प्लीज तो मानकर पढ़िबा किसी दरकार भी नाही चलो गोटे जॉब खाली हे जो व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जेते बेले आईएएस आईपीएस कथा कहूची को आर्टिकल अंडर आपनकर एटा कोन ना वैकेंसी क्रिएशन होउची सो मते को आर्टिकल 310 आपनकर कोन करूची ना ये डॉक्ट्राइन ऑफ आपनकर कोन होतला प्लीजर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर ओवर द सिविल सर्वेंट्स माने जहां भी आपनकर पावर से माने रिप्रेजेंट करिवे ओवर द सिविल सर्वेंट्स तांकर एटा पावर को शो करिवो सो गवर्नमेंट आपनकर प्रेसिडेंट होंतु या फिर आपनकर कोन ना गवर्नर होंतु आइदर पीएम सॉरी प्रेसिडेंट आइदर प्रेसिडेंट को कथा कहंतु या फिर गवर्नर को कथा कहंतु आपनकर तांकर पावर शो करिवे कहां को ऊपर पावर शो ओवर सिविल सर्वेंट्स जहां भी तांकर पावर्स रहिबो एटा आपनकर आर्टिकल 310 ने मेंशन करा जायछि आर्टिकल 311 ने कोन होउची आर्टिकल 311 ने आपनकर कोन हबो ना सेफगार्ड सिविल सर्वेंट्स आपन मानकर अगेंस्ट द आर्बिट्ररी आपनकर जहां भी डिमिजल रहिबो एंड रिमूवल रहिबो सो आपन मानकर आईएएस एंड आईपीएस मानकर रिमूवल आईएएस आईपीएस रिमूवल को नै कि आपन माने कहि परिबे आर्टिकल 312 को आपन माने को कोन कहसिबो आर्टिकल 312 आपण मानकर कोन हबो ना दिस वन इज द आपनकर एम्पावर्स करूची पार्लियामेंट टू क्रिएट्स ऑल इंडिया सर्विसेज इन नेशनल इंटरेस्ट दिस इज प्रोवाइडेड ऑप्शन सी वेरी गुड 315 आपनकर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ना पब्लिक सर्विस कमिशन जो आपण मानकर यूपीएससी अछि तार एस्टैब्लिशमेंट हेतिला अंडर आर्टिकल 315 क्लियर नेक्स्ट तो नेक्स्ट मते को द पब्लिक सर्विस कमिशन जोटा कि यूपीएससी एबे आपण माने को कहितली अंडर आर्टिकल कोड एस्टैब्लिश हेची कहिदा दरकार की संगे संग कहिदबो संगे संग आपण माने को रिपीटेशन हेजिबो 315 हेतिला 312 रे कोन कहितली ना क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज जते भी आपण माने अछि नॉट मेंशन अबाउट द पब्लिक सर्विस एटा आपण ऑल सर्विस आपण ऑल सर्विसेज आपण अंडर आर्टिकल 312 रे आसी जीवो क्रिएट हबो 314 ने आपण मानकर कोन होची आपण माने जो गवर्नमेंट जॉब पे एप्लीकेशन देकी एबे पाठ पढिया को आछंती एटा आपनकर को आर्टिकल रे मेंशन हेची एटा जानिबा नियत दरकार अंडर 312 314 कहले कोन कहबो ना प्रोटेक्शंस ऑफ कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स माने से मानकर रिप्लेसमेंट को सिविल सर्वेंट्स मानकर रिपेल्ड और रिप्लेसमेंट को एटा कोन ना दसौची हना नै मते को एंड आर्टिकल 315 आपनकर कोन कहूची ना प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन आर्टिकल 320 कोन कहूची मते के कहि परिबो दिस वन इज द बोनस के कहि परिबो मते को क्विक टेक इट राइट जल्दी this shows the function and duties of the public service commission एटा रे आपण मानकर जदी एस्टैब्लिश होची अंडर आर्टिकल 315 आर्टिकल 320 रे आपनकर कोन तांकर कोन फंक्शन रहिबो से मानकर कोन ड्यूटीज रहिबो सो फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन is that clear next मते को अगेन कौन कहिची आसो मते को द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमिशन भाया कहा द्वारा ये फे अंडर आर्टिकल 320 आपण माने जानि छंती कोन ना फंक्शंस ऑफ द पब्लिक सर्विस कमिशन एबे ही कहली 15 रे आपनकर एस्टैब्लिशमेंट हेतिला 20 रे आपनकर माने 315 रे एस्टैब्लिश हेतिला 320 रे आपण मानकू कहूची कि कोन तांकर फंक्शन एंड ड्यूटीज रही क्लियर 322 रे कोन कहूची ना तांकर एक्सपेंसेस कोन रहिबो एटा रे आपण मानकू कहूची कोन तांकर ड्यूटीज
and function कौन रहिबो एटारे कहूची सेमानकर एक्सपेंसेस कौन कहइबो and here article 324 रे मेंशन करूची कौन ना waste the powers of election in election commission of India एतिकी जिन समय रखिबो 326 रे कोन कहूची ताले मते कहि दियो adult suffrage that means election based on universal adult franchise that means 18 above समस्त राको वोटिंग देई परिबे so adult suffrage को आपण माने एठी ऐड करि परिबे is that clear guys सोई पड़ गायत्री टाइम अच्छे बहुत टाइम तुम मान पाखे अच्छी बहुत टाइम अच्छी वेस्ट करने लगी सीरियसली कहूँ बहुत टाइम अच्छी वेस्ट करने लगी जाओ सुओ एसी फेसी ऑन कर ब्लैंकेट फ्लैंकेट घोड़े हुआ गरम टिके पड़ानी शीत कमी गलानी है जाइए सुओ तुम मैंने पाठशाठ तुमने पढ़नी आउ प्लीज मु तुम कहूँ बुझल पाठशाठ पढ़नी कहीं मुझे राति तुम गर्जन करी कौन तुम तो इंटरेस्ट जीरो तुमने भी जान तुम फ्यूचर कौन हाँ ना नहीं चौथी गाइज टीचर ठू अधिक सॉरी स्टूडेंट ठू अधिक टीचर इंटरेस्ट थाए एंड टीचर ठू कम स्टूडेंट रो इंटरेस्ट थाए सेठी किछि हुए नाही सेठी तमे माने भी जानि छ तमे माने कोन करूछो मु जानि छी मु कोन करूछि मु त तम माने को ए सब कंटेंट उडा को पेपर रे बाहर करी कि ताकू पानी की खीर मिसे की ग्राइंडिंग करी कि तम माने को क्लास रे बांटी परिबिनी सेमिति जदी बांटिले तम माने को मुंड रे टिके बुद्धि पसंदा ताहाले भी बांटी दियंती बुझिलो ता संगे टिके चॉकलेट ऐड करी कि चॉकलेट सेक बने की तुमको दे दियंती बट यू गाइज आर जस्ट गॉन केस है ना आसो नेशनल इमरजेंसी सबुतिक थिला गायत्री पई तमनको पई न गायत्री पई थिला नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रेशन इज डिक्लेयर्ड अंडर नेशनल इमरजेंसी आपनकर 1975 रे इंदिरा गांधी मैडम आनी देथिले that was the first one then मते कहले नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एग्रेशन इज डिक्लेयर्ड अंडर व्हाट को आर्टिकल मेंशन करा जाउची आर्टिकल 352 को आर्टिकल अंडर आर्टिकल 352 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू वार कंडीशन एक्सटर्नल एग्रेशन और द आर्म्ड रिवॉल्यूशन जोटा आर्म्ड रिवॉल्यूशन कहूची रेबिलियन द आर्म्ड रेबिलियन ता आपन को रिप्लेस हे जाई एटा एक्चुअली अगरो आपन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थिला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ता आपन को चेंज हे कि आर्म्ड रेबिलियन हे जाई को केस रे ताले आपन को तीनटा केस रे आपन को कोन इमरजेंसी लागि परिबो ना ड्यू टू द वार वन नेक्स्ट लागि परिबो एक्सटर्नल एग्रेशन आउ गोटे कोन लागि परिबो ना आपनकर आर्म्ड रेबिलियन is that clear article 356 guys कोन कहूची imposition of president's rule in the state कोन करिवो ना in some cases जदी स्टेट रे प्रेसिडेंट रूल लागे ये आपनकर आर्टिकल 356 कहिवो guys कौन कहूची क्विक 360 कौन कहूची फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 कौन कहबो फाइनेंशियल इमरजेंसी आहुरी बहुत सारा पाठ अछि पढिबा पई एबेठु त मानकर दम बाहरी गला गला हो आर्टिकल 368 कौन कहूची ना प्रोसीड्यूर फॉर constitutional amendment the constitutional amendment अपन का फॉर्म ऑफ अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अपन माने काली क्लास रे पढिथिले अमेंडमेंट सब करिथिले तो जो constitutional amendment अपन का फॉर्म होची तार प्रोसीड्यूर को आर्टिकल 368 रे प्रोसीड्यूर ऑफ constitutional amendment करंट अफेयर्स कर दबनी ले सीए लिखिची constitutional amendment पई हैला नेक्स्ट मते को प्रेसिडेंट्स रूल अपन कर लागुची कोथरे ना स्टेट इमरजेंसी रे एटा को केबे इंपोज हेतिला मते कहलो को अंडर आर्टिकल को टाइम एपना इंपोज हेतिला मते कहलो एबे कहितिली 352 अपन कर कोन कहूची ना नेशनल इमरजेंसी 352 कहूची नेशनल इमरजेंसी ताहाले राइट आंसर हे 50 हे केते कहलो ना under article 356 that provide the president's rule in the state
ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किछि भी कारण हे पारे ओके तो आर्टिकल 358 कोन कहूची ना suspensions of the fundamental rights under the article 19 during the emergency कोन कहूची 356 रे this is a very important guys keep it in your mind that the suspensions of the fundamental rights suspensions of fundamental right under article केते आसीबो 19 and it suspensions कोथि पई हबो ना during emergency ये हेई जिवो क्लियर article 360 कोन कहितली एबे कहितली प्रीवियस रे financial emergency article 360 financial emergency right next questions मते को अच्छा one examination पर again guys if you guys are preparing 3999 अपन माने 2 years validity सहित all one examination को cover up करि परिबे 8285 32825 को कॉल करी की कांटेक्ट भी करि परिबे ओके नेक्स्ट अपन माने के पई पुनी आसिला आ गोटे शॉर्ट ट्रिक देखि दियो टिके माइंड रे जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट ताको मैच करि दियो कोन कहिची ना अंडर आर्टिकल 76 अपन कर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहिबे सेम जदी स्टेट लेवल को पळे आसुचे अंडर आर्टिकल 165 रे अपन कर एडवोकेट जनरल रहउचंती एति कि जिंस 123 रे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस अपन कर प्रेजेंट रहउची जोडा कि अपन कर सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट इंडिया रो जदी स्टेट रे देखुचे अंडर आर्टिकल 213 अपन कर मेंशन रहउची राइट जदी 32 रे हमें देखुचे एससी रिट्स कोठी यूनियन रे देन हमरे सुप्रीम कोर्ट रे रिट्स रहउची हाई कोर्ट रे रिट्स आसीबो केते 226 रे 352 आपनकर नेशनल इमरजेंसी लागुची 356 रे आपनकर स्टेट इमरजेंसी 360 रे आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी एति की आपनको मन रखा को पड़िबो दिस आर द कॉमन जोडा की एग्जाम रे रिपीटेडली पढुची एति की जिंस मन रखबार अछि ये हबो ना नै मते को ना ना आज 11 के डी संग क्लास नाही व्हिच आर्टिकल डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी सर आपन मन को क्लास रे कहि नांती कि सर क्लास नाही बोली सर आपन मन को कहि नांती बोधे हाँ कि हाँ बहुत सुंदर तो हम अमित तमें ही तो कहब सर आपण माने को क्लास रे कहि नांती कि सर का क्लास आज नाही बोली आसा मते को व्हिच आर्टिकल डील्स विथ फाइनेंशियल इमरजेंसी एबे कहली देखिबा केते जण पंडित मन रखिलो फाइनेंशियल इमरजेंसी संगे संगे त माने चेंज कर देलो ना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कोन कहउछ आर्टिकल अरे कुह जल्दी को 370 टा कोठी अछि तथापि मते देखा वालानी तो गायत्री कोन कहि कि तमन को गाली करबी मु निजे जानि परनी समटाइम्स मु भी जानि परनी तमन को कोन कहिबी हां तो आर्टिकल 360 ऑब्वियसली 352 कोन कहली एटा पर नेशनल इमरजेंसी तमन को कहली नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 अंडर आर्टिकल 356 आपनकर प्रेसिडेंट रूल लागुची स्टेट रे आपण मानकर प्रेसिडेंट रूल लागुची दिस वाज इज अंडर आर्टिकल 356 आर्टिकल 365 कहले कोन कहउछो आर्टिकल 365 कहले कोन कहउछो दिस इज अ फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट लीडिंग टू द आर्टिकल 356 जदि किछि भी आपनकर 356 को कवर करी की फेल्युअर होउची ताहाले त आर्टिकल 365 रे कंसीडर कराछि नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहबो मते को द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इज फाउंड इन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड इन वेयर जल्दी क्विकली आंसर दिया मते संध्या गायत्री तुम किए कहूँ स्पीड टाइप करने तुमको कही स्पीड टाइप कर जो मैंने से कौन एक्स्ट्रा मार्क मिल हाँ विवेक तुमको निद लगुला तुम जाइन शोवा गीत फित गायबी शोई पड़ क्लास रे हाँ कह पावर ऑफ प्रेसिडेंट sorry power of parliament to amend the constitution is found in को आर्टिकल ले मेंशन है जी आर्टिकल 368 कारण 360 आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आपनकर कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी 365 आपन माने को कोन कहतिली ना नॉन कंप्लायंस बाय द स्टेट्स विथ द यूनियन डायरेक्शंस देन 368 कोन हे गला ना प्रोवाइड्स करूची प्रोसीजर टू द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट राइट
Parliament to amend the Constitution. And Article 370 आपनकर कोन करूची ना special provision for Jammu and Kashmir जोटा कि reorganized है. Clear? Is that clear? Next, which article defines the official language of the union? Union रो official language आपनकर को article मेंशन करा जाय छी जोटा कि हमरा हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट as the official language describe करा जाय छी under which article किए कहि परिबो very good under article 343 आपनकर declare करा जाय छी हिंदी is our Hindi in devanagari script is our कोन official language 340 कोन है जी appointment of the commission on linguistic minorities. Article 345 guys कोन कहूची मते को Article 345 कोन कहि परिबो ये आपनकर यूनियन हेले 343 345 हेला स्टेट रो ऑफिशियल लैंग्वेज हैला. Article 348 कहले कोन कहूचो ना लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ लॉज. सुप्रीम कोर्ट रो लैंग्वेज clear. Next question mate ko the special offer for linguistic minorities is appointed under linguistic minorities ebe hi तमन को कहिथिली अच्छा मते को स्पेशल ऑफर आपण मानकर कोन हैला केबे हैला को आर्टिकल 350 आपनकर हबनी एटा आपनकर राइट टू सबमिट आसी गला राइट टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन इन एनी लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन इन स्टेट तो एटा आपनकर कोथरे बना राइट टू सबमिट. आर्टिकल 350 ए कोन कहूची इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग कोन हबो ना एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आपण माने मदर टंग रे ताको इंस्ट्रक्शंस देई परिबे. So instructions in mother tongue आपनकर 350A. केते सारा आर्टिकल अछि इंपोर्टेंट आर्टिकल 350B ताले कोन करूची ना यही आपनकर प्रोवाइड करूची अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आर्टिकल 351 कोन करूची ना डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द Hindi language कोन ना डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. Is that clear? Clear? मुंडा टीना हे गलानी आसा मते को नेक्स्ट क्वेश्चन which article ensures that the state provides free legal aid to the poor. Which article ensures the free legal aid to the poor कोन हबो एटा आर्टिकल 38 कोन करूची ना प्रमोट करूची सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. आर्टिकल 39 ए कोन करूची ताले यही आपनकर डायरेक्ट करूची द स्टेट टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एंड इंश्योर द कोन ना आपनकर इक्वल जस्टिस मिलुछ ना नाही. सो इक्वल जस्टिस कथा कहले 39 ए. आर्टिकल 41 कोन करूची ना राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस. right to work, education and public assistance. Okay. Article 43A guys कौन कहूची? Quick. Article 43A कौन कहइबो?
43A, that is the participation of workers in management of industries. The participation of workers माने केते को इंडस्ट्री रहिबे तो ये आपनकर डिसाइड करछ आर्टिकल 43A. क्लियर? अच्छा एबे क्वेश्चंस मु पचारिबी एंड आंसर तमे माने कहि जेमति कि सब दोउछ ए बी रे नाही लिखिबो हैला मते कहले आर्टिकल 1 कोन कहूची क्विक 10 मिनिट रिवीजन मते टिके कहि दियो आर्टिकल 1 आपण माने को कोन कहूची ब्लैंक पेज काढिबी काढिली मते कुह टिके आर्टिकल 1 आपण माने को कोन कहूची आर्टिकल 1 क्विक वेरी गुड स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज आर्टिकल 14 कोन कहूची आपण 1 टू आपण माने को 2 3 4 करी बचेबी ना कोन आर्टिकल 14 आपण को कोन कहूची क्विक आर्टिकल 14 जल्दी कहबो हैला आर्टिकल 14 आपण माने को कोन कहला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज द कोर ऑफ द फंडामेंटल राइट कोन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ देन आपनकर आर्टिकल 19 कोन कहूची मते की कहबो आर्टिकल 19 कोन कहूची क्विक 6 फंडामेंटल राइट्स 6 राइट्स अपन मानकर कोन कोन अपन मान जानि सदी स्पीच असेंबली एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखिया दरकार की दैट इज द बैकबोन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी मते को आर्टिकल 21 कोन कहूची आर्टिकल 21 गाइस कोन कहूची गोटे थरा रिवीजन हे जिवो जल्दी कहबो आर्टिकल 21 क्विक life very good life and personal liberty the life and personal liberty आउ कोन बताइबो इंपोर्टेंट अच्छा आर्टिकल 108 मते टिके कहिलो आर्टिकल 108 जति कि मने पकोची मु कहि जालु छला एंते नै कि सब दियो त मानक पई घोसी मु कहि देबी जति कि मने पडुची इंस्टेंट ती पचारुची आर्टिकल 108 जल्दी जॉइंट सिटिंग और नहीं आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग वाला देन मते कहला आर्टिकल 112 आर्टिकल कोन 112 आपन कोन कहूची क्विक आर्टिकल 112 बहुत कम पिला आंसर दोचो लिटरली बहुत कम पिला आंसर दोचो 112 कहूची एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम माने आपन स्टेटमेंट दैट मींस बजट एठी आपन माने को कोन कहूची ना बजट गला देन आर्टिकल 143 के मते कहबो आर्टिकल 143 मते के कहबो क्विक अरे प्रेसिडेंट कर पावर कोन प्रेसिडेंट कर पावर कहा ऊपरे प्रेसिडेंट कर पावर कहा ऊपरे ना पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो पावर प्रेसिडेंट कर रहिबो कहा ऊपरे ना जुरिसडिक्शन कहि देले आपण माने जानुसंती सुप्रीम कोर्ट कथा एति की रिवीजन ना आउ दरकार मते को अच्छा आर्टिकल 153 आपण माने कोन होची मते के कहि परिबो आर्टिकल 153 क्विक आर्टिकल 153 गाइस 153 आपण मानकर कोन डिस्क्राइब करूची ना गवर्नर ऑफ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव हेड रहिबे बोली गवर्नर आपण मानकर एटा क्वेश्चन सब बेले पछले गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड बोली आपनकर अंडर आर्टिकल 153 रे मेंशन करा जायछि अंडर आर्टिकल 226 मते के कहि परिबे क्विकली की कहिबो आर्टिकल 226 आपण मानकर कोन मेंशन करिछि अरे पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स कहितली ना पावर्स ऑफ द हाई सॉरी आपनकर पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स केमति होबो एटारे सुप्रीम कोर्ट ना 226 आपनकर कोन होची कि रे हाई कोर्ट हबो तो हां पावर ऑफ द हाई कोर्ट रा पावर आपन मानकर हे जिवो जोटा कि आपनकर सेम एज द रीड्स ऑफ द 32 रीड्स ऑफ द हाई कोर्ट्स हैला मते कहलो 243 के गोटे अछि मते कहलो 243 के इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट 243 के आपनकर कोथि पई लाइक इंपोर्टेंट पंचायत राज तो हमें कहि परिबा इलेक्शंस टू द पंचायत कोन लोकल सेल्फ गवर्नेंस तो 243 के बहुत इंपोर्टेंट गाइस मन रखो इलेक्शन ऑफ पंचायत लेवल पंचायत एटा आपण मानकर कोन 243 के रे मेंशन हेसी अंडर आर्टिकल 280 मते के कहि परिबो क्विक अंडर आर्टिकल 280 के कहि परिबो
अरे फाइनेंस कमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कौन ना रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ताहले हमें कहि परिबा कि फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का भीतर यूनियन एंड स्टेट भीतर फाइनेंस कमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू हैला अंडर आर्टिकल 300 की 300 ए मते को 300 छाड़ा 300 ए मते कहलो अरे 300 ए क्विक प्रॉपर्टी अपन करो राइट टू प्रॉपर्टी शिफ्ट हो जाइतिला फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू द लीगल राइट तो राइट टू प्रॉपर्टी शिफ्टिंग राइट टू प्रॉपर्टी शिफ्ट सब कहूँ गोटे गोटे करके इंपोर्टेंट मन पकाउछि जति मन न रखिबो मु किछि करि परिबिनी मते कुआ आर्टिकल 312 कहले कोन कहउछ मते कुआ 312 कहले आईएएस आईपीएस एमाने समस्तिंकर इंपोर्टेंट होउछि नै ऑल इंडिया सर्विसेज इंपोर्टेंट फॉर द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स आपनकर 312 रे 312 रे आईएएस आईपीएस आईईएस तो ए सब मानु को अपन माने रेट करि परिबे एक्सेट्रा ताहाले मते को आर्टिकल 315 अपन माने का करि परिबे ना 315 आपनकर पब्लिक सर्विस कमिशन एस्टैब्लिश हेतिला 320 रे आपन मानकर तांकर ड्यूटीज को एलाबोरेट करा जायछि 324 माने रखो इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करूछि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एटा मन रखो इंपोर्टेंट 315 कहले एस्टैब्लिशमेंट कोन कहली ना यूपीएससी आपनकर स्टेट पीसीएस 320 कहले तांकर ड्यूटीज कार ना आईसीएस आईएस मानकर ड्यूटीज 324 कहले गाइस मने रखो इंपोर्टेंट जोटा कि इलेक्शन कमिशन कंडक्ट करूछि फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोली सो इलेक्शन कमिशन कंडक्ट्स फ्री एंड फेयर एतिकी जिंस इंपोर्टेंट मने रखिबो 352 कहले नेशनल इमरजेंसी वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन केसेस 365 कहले स्टेट इमरजेंसी आपन को लागुतला जतरे प्रेसिडेंट रूल आपन को लागुतला देन 360 छाडी देली 360 कहले फाइनेंशियल इमरजेंसी सेटा भी कहली 368 त माने को कहितले ऑलरेडी तोथरे आपन माने को ना पावर ऑफ द पार्लियामेंट आपन को अमेंड होउची कॉन्स्टिट्यूशन रे तोथरे की चार्ज मैकेनिज्म द सॉरी चेंज जतरे आपन को चेंज मैकेनिज्म आसुची एतिकी जिंस आपण मानकु मने रखबार अछि क्लियर रिवीजन हेई गला गोटे थर करे रिवीजन हेई गला फाइन सो अगेन कहूची अंडर वन एग्जामिनेशन पय जदि आपण माने प्रिपरेशन करछथि 3999 देकी 2 इयर्स रा वैलिडिटी आपण माने नै परिबे एथिरे आपण मानकर ऑल वन एग्जामिनेशन कवर ऑफ हेसिबो 140 is related to the SCBC मैम कोटरे कहली कि चेंज हो जाई टिके जदि स्पीड रे किछि एपट सेपट हे जाई छि गोटे दीटा माने फ्लो रे ब्रेक हे किछि लिखि देई छि तार टिके चेंज करि दो ओके किशोर को नंबर मोरा मने नाही को नंबरटा मोरा मन नै कारण आर्टिकल सबुथिरे अछि सबुटा को सबुथिरे रिलेट करि कि लिखि छि ना सेथि लागि ओके बाकी सिविल सर्विस पे जदि आपण माने प्रिपरेशन करसन दिस आर द रिस्पेक्टिव प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट बैचेस हियर इज द हेल्पलाइन नंबर आपण माने जॉइन करि परिबे एल्स आपण माने ओडिसा टीचिंग एग्जामिनेशन पे जदि भी प्रिपरेशन करूछंती दिस आर द प्राइसेस दिस आर द बैचेस एंड वैलिडिटी हियर इज द हेल्पलाइन नंबर आपण माने द्रोण एसएसपी टीजीटी पे प्रारंभ जेटीटी पे 1 ईयर वैलिडिटी सहित 1499 एंड 1199 अवेलेबल अछि एंड ता सहित संस्कृत पेड कोर्स जोटा कि अलगा कोठी आपण माने को मिलिबनी हम पाखरे अवेलेबल अछि बाकी ए क्लास रो पीडीएफ आपण माने टेलीग्राम चैनल ले पाइसिबे and here is my insta id you can follow me here किशोर ना की मते कहतले किशोर की कहले एससीबीसी टा गाइस तमे प्लीज टिके चेक करि दबो चेंज करि दबो ताको जदी फ्लो रे मु टिके लिखि देछि एक्स्ट्रा लिखि देछि है ना काई कहलो माने कंटीन्यूअसली हमको क्वेश्चंस करिवार थिला तमे निजे भाबनो 1.5 घंटा टाइम पूरा लागि जाछ एक्जेक्टली माने किछि विदाउट एनी बकवास विदाउट एनी ब्रेक तो माने देखि छ मु केति की स्पीड रे क्लास पे आज नै छी बट स्टिल आज रे क्वेश्चंस थिला ओनली 35 टा ओके तो 35 एंड लेटर ऑन टिके डिस्कस करले ओवरऑली देखि दियो त माने हैला नेक्स्ट टॉपिक कोन रहिबो सेना मु रात्रि डिस्कस माने निज सहित टिके करे निजे डिसाइड करे कोन रखिबी तापर तमनकु काली सकाळू थंबनेल चेक करि दबो 12 गोटे सुधा थंबनेल में चेंज करि दोछ ओके
Okay, chalo. Thank you so much, guys, for your presence. Hope jodi ete late night jaye class nouchi. Like after I'm not in a good health still taking your classes, तो expect करूची तो माने टिके larger number एक joint माने connect हो so that मोर टिके जोश आसीबो तो मानकु आहुरी जोश रा सहित क्लास नेबा पई रेस्ट जदी किछि तो माने चाहूच एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किछि लूफॉल रहूची देन कमेंट सेक्शन में तो माने मेंशन करि परिबो विदाउट एनी सेकंड थॉट मु ताकू इंप्लीमेंट करी ठीक अछि थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच you all are my favorite so kindly do present in all my classes. Thank you so much. Have a good night. Do take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. Have a good night, guys. Bye bye.